Morning, my dear students. Welcome to the online classes and hope you all are good. And I'm too fine over here. So as you can see on the screen, Lost Spring, the title of unit number 2. And we are going to learn today this session. But before starting the chapter, I just want to draw your attention for that on author. The name of the author is Anna. Now let me explain her work and when she was born. So Anis Jung was born in Rockela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India, and she has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. That means she has not done the work in India only, but outside of country also. ओके उनके जो माता पिता थे मीन्स जो मम्मी पापा थे वो भी राइटर्स थे और ज्यादातर उनकी स्टोरीज चाइल्डहुड पे डिपेंड करती है, पॉवर्टी पर डिपेंड करती है, वो जो ज्यादा रिफर्स करती है स्टोरीज, वो जो लाइवली जी कॉलोनिस्ट है, जो कॉलन मींस दैट जो हमारी सोसाइटीज में जो रेगुलरली और यूजुअली जो भी चीजें वो देखती है वो अपनी स्टोरीज में वो लेके आती है. So here we will start a chapter, and the title of the chapter is Sometimes I Find a Rupee in the Garbage. Here, the Lost Spring, the title Lost Spring is referred as childhood. Means the spring is referred as childhood. Here the theme is poverty. In this session, we will see the whole chapter goes through the poverty and the labor, child labor. So here the author refer the spring as childhood. Now let me explain you properly. So the first I'm reading. Now you can see over here, the first thing is the chapter begins with the question. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. So, the author है Anishan, who is asking to the Sahib, the first character which is given in the first line only, Sahib को वो पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? जब वो रोज उनको देखती है, लेकिन आज उनसे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? साहिब एक छोटा सा बच्चा है, एक रैक पिकर है, ओके, जो रोज सुबह में उठकर गार्बेज में रैक पिकिंग करने चले जाता है. एंड यहाँ पर लिखा है एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रॉचिंग फॉर गोल्ड. हियर गोल्ड दैट डजंट मीन ओके अ सब्सटेंस. गोल्ड मींस to get something for survival, to get something better for survival. Okay, so यहाँ जो gold का meaning है वो different. Sahib left his home long ago, said amidst the green fields of Dhaka. That means जो साहिब का घर था वो कहाँ पे था? ढाका में था, और उनके पास बहुत सारी जगह थी, बहुत सारे फार्म्स थे. मीन्स वो जहाँ पर रहते थे वो एक ग्रीन फील्ड्स थी, ओके, और वहां पर उनका खुद का एक मकान था, उनका एक खुद का घर था. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. यहाँ पर लिखा है reason, due to which reason Sahib has come so far. यहाँ पर रीजन बताया गया कि साहिब जो है, जो लड़का अभी रैक पिकिंग कर रहा है, उसको रैक पिकिंग करने की जरूरत क्या है? क्योंकि उनके पास तो सब कुछ था, लेकिन आज वो रैक पिकिंग क्यों कर रहा है? सो रैक पिकिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि जब जहां पर उनका घर था वहां पर स्टॉर्म्स आए, मींस बाढ़ आए, और एक बार नहीं कई दफा बाढ़ आए, और उससे उनकी जो ग्रीन फील्ड्स थी, उनके जो घर थे, वो सभी नष्ट हो गए, और दैट इज व्हाई दे हैव माइग्रेटेड. Okay, I'm reading further. His mother tells him that's why they left, looking for gold in big cities where he now lives. So ये सब है वो भी नहीं जानता, लेकिन उनकी मम्मी, उनकी जो माता है, मीन्स जो साहिब की मदर है, उन्होंने उनको बताया था कि ऐसा हुआ था, बाढ़ आई थी, स्टॉर्म्स आए थे, एक नहीं कई दफा स्टॉर्म्स आए, हमारे सब खेत थे वो सब वो बाढ़ में चले गए, and that is why we had not anything, we did not have anything. That is why we have migrated over here. Okay, और वो स्टोरी, सेम स्टोरी वो ऑथर को बता रहा है अभी कि मैं गार्बेज में जो रैक पिकिंग है इसलिए कर रहा हूँ because we do not have anything to survive. That is why here it is written, that's why they left looking for gold.
Looking for gold means looking for survival, looking for residence, looking for food. They have migrated in another city. I have nothing else to do. He mutters, looking away. अब ये due to reason all the things he has told, but right now he is telling more कि मेरे पास कुछ काम ही नहीं है करने को और इसीलिए तो मैं रैंक पिकिंग कर रहा हूँ. So अब जो author है वो उनको बोलती है go to school. I secretly believe, realizing immediately how follow the advice was sound. पहले वो बोलती है जो ऑथर है वो सजेस्ट करती है why do you do this, okay you should go to school instead of doing all this thing right picking, why you are doing right picking instead of that you should go to school. लेकिन ये जो सजेशन करने के बाद तुरंत ही ओके वो सोचती है कि मैंने कैसी होलो सी एडवाइस दे दी, कैसा सजेशन दिया दे दिया. बिकॉज अगर वो जो स्कूल जा पाता, अगर वो स्कूल मीन्स अगर उनके पास इतना पैसा होता कि वो स्कूल जा पाता तो वो लड़का ये ट्रैक पिकिंग करता ही क्यों. वो वहां पर स्टॉप हो जाती है. She has just stopped now by saying this sentence. Now see what happens. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. But by listening that thing, Sahib is answering. Sahib is answering to author. And what he is answering? Sahib is saying that there is no school in my neighborhood. जब स्कूल बन जाएगा, I will definitely go. If I start a school, will you come? Now, another thing over here, the author has asked the question. Author अभी question पूछते हैं साहब को और साहब को question पूछते हैं क्या question पूछते हैं देखो कि if I will start a school, will you come? अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो अगर आप आओगे मींस अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो आप आओगे वहां. I ask half joking मींस उसको ऐसा लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूं और वो जोक कर रही है. वो जो बच्चा है साहिब है उनको ऐसा लग रहा है. Yes, he says smiles proudly. उनके फेस पर जो साहिब था उसके फेस पर स्माइल आ गई, बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई और वो बोल रहा है कि yes definitely I will come if you will open the school. I will definitely come because I love studies. In the sentence he says all these things. A few days later I see him running up to me. थोड़ी देर के बाद थोड़े दिन चले गए और फिर जो ऑथर है एनिसन उनको वो लड़का मिलने आता है साहिब और बोलता है is your school ready as you have promised me that when I will open the school I will definitely come, right? And as she has promised, so the child has come once again and asked, have you opened the school so I may come? Now the author is replying, it takes longer to build a school. I say embarrassed at having made a promise that was not me. अब वो थोड़ी embarrassed हो जाती है क्योंकि उन्होंने जो प्रॉमिस की थी साहिब को वो थोड़ी ज्यादा उतनी हैवी नहीं थी मींस कि जो प्रॉमिस थी she has not completed. And right now when Sahib comes to her, okay, what she can speak because she has not over no, she has not get over with the promise. So the Sahib is still asking, ma'am, have you opened the school? If you have opened the school, I will definitely come. But promise like mine abound in every corner of his blackboard. After months of knowing him, I ask him his name. Now see, the whole month has passed away. Till now, they both were talking. But the author, and she doesn't know the name of the child. उनको child का name ही नहीं पता है जो rank picking कर रहा है. And right now, at this age, at this time, she is asking the name of him. And he is replying, Sahib-e-Alam. Now Sahib-e-Alam, he announces he does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Okay, उसका जो name है, जो rank picking कर रहा है boy, उसका name क्या है? Sahib-e-Alam. And Sahib-e-Alam means Lord of universe. Okay, ब्रह्मांड करता. We can say the owner of the earth and the sky. बट अभी एनिसन उसका जो नाम सुनते हैं तब वो बता रहे हैं कि अगर ये बच्चा को जो लड़का है रैंक पिकिंग कर रहा है साहब उसको उसका प्रॉपर मीनिंग मालूम पड़ जाता तो ये बिलीव ही नहीं करता कि मेरा जो नेम है उसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर.
he would have a hard time believing it, unaware of what his name represents. He roams the streets with his friends and an army of barefoot boys. Now see, another one scene has been added over here. Now, Sahib is not only a one boy who is rag picking, who is doing the rag picking. Okay, so वो अकेला लड़का नहीं है यहाँ पर, उसके साथ कहीं ऐसे बॉयज हैं जो ऐसा ही काम कर रहे हैं और यहाँ पर उसकी नजर जाती है, ऑथर की नजर जाती है, वो देखती है कि there is not only one boy who is doing that such kind of thing, but there are lots of people and there are lots of boys who are doing the same. Over the months, I have come to recognize each of them. उसने सबको देख लिया और सबको अब वो जानती है, नाम से जानती है, उन सबको पहचानती है, रोज आके ये देखती है वो लोग क्या कर रहे हैं. Why aren't you wearing chappals? I asked one. उनमें से एक लड़का है, उनको उन्होंने पूछा why are why aren't you wearing chappals? आप स्लीपर्स चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो? अब देखो वो क्या बोलता है. My mother did not bring them down from the sand. He answers simply. See, मेरी मम्मी वो मुझे लेके नहीं दे रही है, मींस शायद से उतार के नहीं दे रही है, इसलिए मैंने ये नहीं पहना. वो ऐसा बोल रहे हैं. Now, 1 minute. So here you can see, if indeed he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. अगर एक यहाँ पर एक और लड़का उसको मिल जाता है, ऑथर को, उसके पास मैचिंग पैड्स नहीं है, शूज तो है लेकिन मैचिंग पैड्स नहीं है. When I comment on it, he supples his feet and says nothing. जब मैं उसके ऊपर कमेंट करती हूँ तो वो कुछ नहीं बोलता है, बस ऐसे ही खड़ा रहता है चुपचाप. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि उन लोगों की लाइफ कैसी थी, कैसी पॉवर्टी में जी रहे थे. The author, which refers spring as childhood. Childhood में क्या होता है? Childhood में हम नए नए talents discover करते हैं. We discover new talents. We learn new things, right? But over here, the boys, the boys who are doing the right picking, they don't have anything. They don't have anything. They don't have food. Okay, they don't have education to survive. They don't have food to eat. They don't have education to learn. They don't have a roof to live. And in the spring, where the new flower blooms, the new leaves comes on a tree. So, जैसे एक spring season, very beautiful season. एक spring season होता है जो हमारे पूरे year में, वो एक beautiful season होता है. वहाँ पर क्या होता है? New flowers आते हैं, new trees पे new पत्ते आते हैं, new leaves आते हैं. वैसे ही childhood भी एक spring season की तरह है, जहाँ पर एक child new talents discover करते हैं, new things learn करते हैं. और जैसे वो ये जब डिस्कवर जो टैलेंट्स वो डिस्कवर करते करते आगे बढ़ते हैं और उसका चाइल्डहुड एक हैप्पी हो जाता है. लेकिन यहाँ पर ये सब जो बॉयज है जो राइट पिकिंग कर रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है. दे डू नॉट हैव एनीथिंग. दैट इज व्हाई दे आर डूइंग दिस. सो फ्रॉम दिस नाउ ऑनवर्ड्स वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट टेक केयर. बाय बाय. Good morning, my dear friends, and welcome once again in online classes. You can see on screen chapter number 2, which we have already seen in previous lecture. We have seen the story of Sahib and the author Anisjan, who was questioning to Sahib about the poverty. And हमने last में देखा कि जो बच्चे थे उनके पास चप्पल्स भी नहीं थे पहनने के लिए. And how sad it was. And we stopped over there. So right now in today's session, we will begin from there. And I'm reading from the second line over here, as you can see. And I'm reading from there, so pay attention properly. Even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. देखो यहाँ पर एक और बच्चे को मिलते हैं ऑथर जिसके पास शूज तो थे लेकिन मैच नहीं कर रहे थे. अलग अलग चप्पल्स थे, चप्पल्स थे और शूज थे, वो मैच नहीं कर रहे थे. मींस दोनों जो पैड्स थी वो अलग अलग थी. When I comment on it, supples his feet and says nothing. जब मैंने उनके ऊपर कमेंट किया, ऑथर बोल रहे हैं कि मैंने उनके ऊपर जब कमेंट किया, when I asked him, that why do you wear such type of shoes that doesn't match,
तो उसने क्या किया, जो बच्चा था उसने अपने पैर थोड़े छुपा लिए, वो कुछ बोला नहीं. आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पैड ऑन हिज लाइफ. इतने भी एक और बच्चा जो थर्ड बॉय है उसके बाजू में ही खड़ा है, वो बोल रहा है आई वॉन्ट शूज. उसने अपनी पूरी लाइफ में, थ्रू आउट हिज होल लाइफ, he has not worn the shoes. देखो, द स्टेज ऑफ पॉवर्टी. ये जो एक बच्चा है उसने अपनी लाइफ में कभी भी शूज नहीं पहना, कभी भी नहीं, और वो बोलता है वांट शूज. ये जब all the things, okay, when she is getting through all the things, she is remembering one story and she is going to explain us in the story. जब ये जो बैर फूट वाले बच्चों को वो देखते हैं, जो ऑथर देखते हैं, जब वो एक्सप्लेन करते हैं सब, और जब वो एक्सप्लेन करते हैं हमारे सामने इन स्टोरी, तो उन्हें और एक स्टोरी याद आ जाती है जो एक आदमी था उसने उनको बताई थी. The man who was living in Udupi once told me that as a young boy he would go to school past an old temple. जैसे एक बॉय था जो छोटा था, तो वो एक टेंपल के वहां से वो स्कूल जाता था. एंड वेयर हिज फादर वाज, और जो पापा था, मींस जो उनके पेरेंट्स थे, उसके फादर थे, वो क्या थे, प्रीस्ट थे, मंदिर के पुजारी थे. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. Along along to school, when he stopped at the temple, okay, he prayed for the pair of shoes. Means he did not have shoes to wear at the time. So the same story that that author is explaining right now. कि एक और स्टोरी वो बता रही है, जैसे एक लड़का था उडीपी में रहता था, उसने उनको बताई थी कि एक लड़का था वहां पर जो रोज स्कूल जाया करता था, और बीच में रास्ते में एक टेंपल पड़ता था. वो टेंपल का जो पुजारी था उसका ही वो लड़का था, लेकिन वो क्या कर रहा था, बहुत पॉवर्टी में वो अपनी लाइफ, जो अपना जीवन है वो वहां पर स्पेंड कर रहा था. उसके पास कुछ था नहीं, और वो रोज मंदिर जाता, मंदिर में भगवान के सामने वो क्या मांगता, प्रे करता पैरों शूज के लिए. And the long period had passed away. Right now, 30 years later, 30 years later, I visited his town at the time. लड़का बता रहे, Mr. Author is saying to us कि 30 years later, जब मैं वो टाउन में गई, मैं टाउन में जा रहा हूँ, which was now known in an era of desolation in the backward, where live the new priest. अब वो जो टाउन है वो पूरी तरह से बदल गया है. वहां पर जो ओल्ड पुजारी थे, जो ओल्ड प्रीस्ट थे, वो नहीं है, अब एक न्यू प्रीस्ट आ रहे हैं, आ गए हैं. There were red and white plastic chairs. वहां पर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स भी रखी हुई है. A young boy dressed in a grey uniform. अब यहाँ पर एक लड़का, ओके, जो ग्रे यूनिफॉर्म में है और wearing socks and shoes. Now see, after 30 years later, she is seeing a boy who is having a dress, means a grey uniform dress, and wearing socks and shoes, arrive panting and threw his school bag on folding bag. अगर जो बेड था वो बेड के ऊपर वो अपनी जो बैग है वो उतार कर वहां पर फेंक देता है, और उसके पास सॉक्स भी है, शूज भी है, उसने पहना. अब इसके मींस by adding this lines, what does the author tell us? वो हमें क्या बताना चाहती है, देखो आगे. I remember the prayer another boy had made to the goddess, where he had finally got a pair of shoes before 30 years. Now we are going back to 30 years. अब वो याद कर रही है कि before 30 years, I remember the prayer of that boy who was praying for the shoes. जो एक लड़का था, वो अपने शूज के लिए प्रे कर रहा था, वो आज प्रे कंप्लीटली हो गई है, और अब वो देख रही है कि जो न्यू बॉय है, जो न्यू प्रिंस का बॉय है, वो शूज पहना हुआ है, उसके पास शूज है, पैर ऑफ शूज है. That we never lose them. The goddess had granted his prayer. अब जो गॉड है उसने वहां पर उसकी जो प्रेयर थी वो उसकी ग्रांट कर ली है, मींस उसको सुना है. और वो अब जो ऑथर है वो हमें ऐसा ही एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पर. Young boys like the son of the priest now was Zeus, but many other like the replicas in my neighborhood remain useless. अब यहाँ पर बता रही है directly, okay, she comes back to the साइड स्टोरी कि वहां पर तो जो प्रिश के लड़के हैं वो उनके पास तो शूज आ गए, लेकिन अभी भी हमारे नेबरहुड्स में कई ऐसे लड़के हैं, जैसे साहेब है, साहेब के दोस्त हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, मींस पहनने के लिए चप्पल्स भी नहीं. My acquaintance with the barefoot practicals leads me to सीमापुरी. अब मेरी ये सोच थी, वो मुझे कहां पर ले गई, सीमापुरी. सीमापुरी is the area of Delhi, okay, where illegal people are living right now. Still
in India, there are lots of illegal people who has migrated from that country, Bangladesh, and they are living right now. They do not have proper food to eat. They do not have roof to survive. And right now, the author is saying to us that my question with the Beirut practicals leads me to Singapore. अब वो सीमापुरी जाते हैं, सीमापुरी लेके a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. दिल्ली से थोड़ा ही नजदीक नजदीक, थोड़ा दूर, ओके, वहां पर एक जो प्लेस है उसका नाम है सीमापुरी. मेटाफोरिकली मीन्स ऐसी कोई चीज को बताना जो असल में है नहीं, ओके, लेकिन हम उसको बता सकते हैं किसी का एग्जांपल देके. Those who live here are squatters who came from Bangladesh. Squatters means चोरी छुपी जो लोग आए हैं, ओके, जो माइग्रेटेड होके यहाँ पर रह रहे हैं, जो इलीगल है. स्क्वाटर्स मीन इलीगल पीपल जो यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे साहिब रह रहे थे और वो जो रैंक पिकिंग कर रहे थे. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1970. अब देखो जो ऑथर है वो भी बता रहे हैं कि वो लोग 1971 से यहाँ रह रहे हैं, ओके. Even though they do not have proper roof to survive, they do not have enough food to eat. Sahib's family is among them. एक जो साहिब की फैमिली थी वो उनमें से ही एक थी. Simapuri was died of violent days. It is still is, but it is no longer empty. In structures of mud with rows of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rectangles. Now see, here the author is explaining there were not only one or two or three families, there were lots of families of rectangles. उसके बाजू में से वो सीवेज जा रही थी, इस गटर की लाइन जा रही थी, ऐसे वहां पर मड पड़ा था और जहां हम रह भी नहीं सकते ऐसी पॉवर्टी में वो लोग रहते थे. और करीबन 10,000 रेक्टिकल्स हो गए, ओके. यहाँ पर जो आके वो देखती है, नॉट ओनली वन टू और 100 or 1,000, 10,000 रेक्टिकल्स शी हैज फाउंड. They have lived here for more than 30 years without an identity. अब यहाँ पर वो लोग 1971 से रह रहे हैं. Means they have been living over here since 1971, but they do not have identity. उनके पास अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं. Without permits, but with ration card, they get their names on borders. See, उनके पास आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन उसके पास रेशन कार्ड है. That because उनके पास आइडेंटिटी मीन्स इंडिया में रहने से ज्यादा उनके पास जो जरूरी चीज है वो एक खाना. वो लोग ऐसा सोच रहे कि हमें अगर दिन का पूरा खाना मिल गया तो बस बहुत हो गया. ऐसे भी लोग हैं जिनको पूरा दिन का खाना प्रॉपर मिलता भी नहीं, और ये जो ऑथर है वो ऐसे लोगों के बारे में अब यहाँ पर बात कर रहे हैं. Food is more important for survival than an identity. यहाँ पर one line is explaining very briefly. See, food is more important for survival than an identity. Identity से ज्यादा means being as an Indian से ज्यादा हमारे लिए फूड इम्पोर्टेंट है. अगर हम फूड हमारे पास होगा तो ही हम सर्वाइव कर सकेंगे. ऐसा वो जो रेक्टिकल्स है, वो जो फैमिलीज है, उससे ये मालूम पड़ता है. If at the end of the day we can feed our families and go to the bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. अब वो लोग बता रहे हैं कि हमें यहाँ पर दिन का जो रात में एक खाना मिल जाता है हमारी फैमिलीज को, वो हमारे लिए बहुत है. हम सेटिस्फाई है उससे, क्योंकि अगर हम यहाँ से वापस वहां जाएंगे जहां पर हमारी जो जमीन थी, ओके, लेकिन वहां पर कुछ खाने के लिए नहीं था. इससे अच्छा है हम यही रहे और यहाँ पर ही हमारा जो लाइफ है, हमारी जो बाकी बची हुई लाइफ है यहाँ पर ही बिताए. See a group of women in tattered saris. When I asked them why they left the beautiful land of green fields and rivers, when the author was asking why they have migrated from Bangladesh to Simapuri. Now the women who are just over there, they are explaining. They are explaining that what happened and why they have migrated over here. That I have already told you in the previous section. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means right picking. See, अगर हम सीमापुरी में रहते हो, सीमापुरी में जितनी भी families रहती है, they all do the same thing. They all do the one work, and that is right picking. Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. Means वो लोग garbage में ही अपनी survival ढूंढते हैं.
वो लोग जो गार्बेज इकट्ठा करते हैं, वो जो रैक पिकिंग करते हैं, उसमें से ही वो लोग दिन का खाना खाते हैं। जो उसमें से वो ढूंढते हैं वो जाके बेचते हैं, और उसमें से जो पैसे मिलते हैं उसमें से वो फूड लेके खाते हैं। इट इज दैट डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर दैट हेड्स, इवन इफ इट इज लीकिंग। उनको ऊपर एक रूफ मिल जाती है उन पैसों से, भले ही फिर वो उस ऊपर से पानी टपक रहा होता हो और लीक हो, फिर भी वो लोग वहां पर आसानी से मिस अच्छे से रहते हैं, वो ऐसा बता रहे हैं। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन, I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Now see, Sahib is telling, okay, Sahib is saying now. Now Sahib has come once again and Sahib is telling. Sometimes I find 10 rupee note from the garbage. His eyes lightening up. जैसे बोल रहा था वो बहुत खुश हो रहा है। 10 रुपीज का नोट जब उसको गार्बेज में से मिलता है वो बहुत खुश हो रहा है। और जैसे ये साहब है वो एक्सप्लेन कर रहा है that sometimes I find a rupee, even a 10 rupee note. See, his face has lightened up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. जब कहीं दफा ऐसा होता है कि जब एक सिल्वर कॉइन गार्बेज में से मिल जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, साहब क्या करता है, कुछ और सिल्वर कॉइन्स ढूंढने की फिराक में है, और उससे वो इस कोशिश में लग जाता है कि गार्बेज में और कुछ रैक पिकिंग करूं तो मुझे कोई और सिल्वर कॉइन वहां से मिल जाए। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elder, it is means of survival. See, the author is saying right now कि उनके लिए रैक पिकिंग ही सब कुछ मीन्स, रैक पिकिंग वो लोग करेंगे, जो मिलेगा वो सेल करेंगे, और रात को वो लोग आएंगे और शांति से सो जाएंगे। उनके लिए यही जीवन है। जो बच्चे हैं, बूढ़े, सबके लिए यही एक जीवन है। One winter morning, I see Saib standing by the fence gate of neighborhood club. एक मॉर्निंग है जब वो देखती है साहिब को, उनके नेबरहुड क्लब में एक बाजू में एक जगह है, वहां पर वो देखती है उनको, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन व्हाइट। तो यंग मैन को देखती है जो ड्रेस कर रहे हैं, मिस ड्रेस किया व्हाइट ड्रेसिंग, क्योंकि व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, प्लेइंग टेनिस। आई लाइक द गेम comes and was standing behind the fence. फेंस के बाहर वो जो साहब वो वहां पर बैठा है, मिस वहां पर खड़ा है और बोल रहा है किसको, ऑथर को, क्या लाइक द गेम। वो लोग जो टेनिस खेल रहे हैं, 2% व्हाइट कोट, मिस व्हाइट यूनिफॉर्म डालकर, व्हाइट कपड़े पहनकर, वो साहब देख रहा है और साहब बोल रहा है क्या लाइक द गेम, आई वांट टू प्ले। मींस वो डिजायर is desiring that I want to play, I like the game. I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. Side 2 is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. Now see, Saib is saying that Saib 2 is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shoes. Sometimes जो साहेब है वो भी वो जो शूज है वो पहनने की कोशिश करता है, वो पहनता है, लेकिन वो अनयूजुअल लग रहा है, वो अनअप्रोप्रिएट लगता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कपड़े हैं, साहब के कपड़े हैं, वो ठीक नहीं है। और when he wears the shoes of tennis, okay, it looks beautiful, but the clothes which he wears over the body, it does not look good because of the poverty. He says in the manner of explanation, the fact that they are discarded shoes of some rich boy. तो रिच बॉय है, उसके जो शूज है वो वहां पर वो लोग नहीं लाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पर डाल देते हैं, जिससे जो गरीब बच्चे वो यहाँ से ले सके। वो परहैप्स रिफ्यूज टू wear them because of a hole in one of them. लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि जो शूज होते हैं वो लोग कलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो शूज के अंदर हॉल होता है। Who has walked barefoot? For one who has biked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. फिर भी वो जो शूज में एक हॉल होता है, फिर भी वो लोग ले लेते हैं, जिसको उठा लेते हैं, वो कलेक्ट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो फिर भी वो जो शूज है उनके लिए तो ऐसा है जैसे उनका एक ड्रीम ट्रू हो गया। But the game he's watching so intentionally is out of his reach. लेकिन जो ये गेम देख रहे हैं वो ये कभी नहीं खेल पाएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। The author is narrating like that. This morning, Saib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I'm paid 800 rupees and all my bills. Does he like the job? Now see, the life, the life of the Sahib has changed. Now Sahib is on his way to the milk booth. एक milk booth है, वहां पर वो काम कर रहा है,
or the person who is paying 800 rupees to साहेब. अब कितने रुपीस साहेब को मिल रहे हैं? 800 rupees साहेब को मिल रहे हैं. And does he like the job? यहाँ पर एक question है. Does he like the job? I ask. His face I see has lost the can free. The steel canister, the steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sab is no longer his old master. See, right now the life has changed. But फिर भी जो author है उनकी eyes में वो जो पुरानी छवि थी साहब की वो ही दिखाई दे रही है. जैसे how he had a bag of rag picking and how he was roaming here and there, how he was finding all this thing in the garbage. And at the last, the story ends that the Saib is no longer his own master. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि साहिब एक totally different आदमी है यहाँ पर और साहिब is no longer his own master. So, my dear students, I hope that you all have understood the story and you have been through about all this story, how the poverty works throughout the story, how the life of practicals we have seen, and how the author has narrated. So, in the next lecture, we will see the part number 2 of the story, Lost Spring. Till that, stay home, stay safe. Bye bye.